Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's lecture is for class 10th. It is subject to biology and the topic is pollination. So what is pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a corpel is called pollination. Pollination is done by insects like bees and butterflies, birds, wind and water. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower on the same plant, it is called self-pollination. यानी जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मगर एक ही प्लांट में, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ अगर एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, यानी फ्लावर का जो मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, वो भी सेल्फ पोलिनेशन है। यहाँ अगर दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे लेकिन एक ही प्लांट के, सो दैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन. And another is cross pollination, when the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant, it is called cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि एक प्लांट का जो फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफ़र होगा, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. These insects help in cross pollination. So when an insect sits on the flower of a plant or for sucking nectar, then the pollen grains from the anther of this flower stick to its body, and when this insect now sits on another flower of another similar plant, then the pollen grains sticking to its body are transferred to the stigma of the second flower. So in this way, the insect transfers the pollen grains from the anther of flower in one plant to the stigma of flower in another plant and causes cross pollination. यानी जो फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे होनी भी, जब वो एक प्लांट पर जाती है फ्लावर में वो नेक्टर हासिल करने के लिए, तो जो फ्लावर्स में वहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो इसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं. जब यही होनी भी फिर दूसरे प्लांट पर जाती है, दूसरे फ्लावर पर जाती है, तो ये पोलन ग्रेन वहाँ पर उस फ्लावर पर पड़ जाता है, तो वहाँ पर ये ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम दिस टू दिस स्टिग्मा दिस कॉर्पल, एंड दिस causes cross pollination. Now when cross pollination occurs, then after pollen grain falls on the stigma, the next step is fertilization. So what is fertilization? Fertilization occurs when the male gamete present in pollen grain joins with the female gamete present in ovule. यानी जब मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमीट, इसमें जो मेल गैमीट है जब वो ज्वाइन करेगा फीमेल गैमीट के साथ, तो इसको हम कहेंगे ये फर्टिलाइजेशन है. सो व्हेन पोलन ग्रेन falls on the stigma of the corpel, it bursts open and grows a pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. So a male gamete moves down the pollen tube. The pollen tube enters the ovule in the ovary. The tip of pollen tube bursts open and male gamete comes out of pollen tube. So in ovary, the male gamete of pollen combines with the nucleus of female gamete or egg present in ovule to form a fertilizer egg called zygote. So in this way, fertilization occurs. Now after fertilization, there is formation of fruits and seeds. And the ovule develops into seed, and the ovary, a flower develops and becomes a fruit with seeds inside it. The seed is a